हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ ग्रीन ट्रेड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द पॉसिबल मूव दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन गिव फॉर अपकमिंग वीक, और हमारे पोजीशंस हमें कैसे स्ट्रक्चर करने चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इन केस यू आर होल्डिंग सम क्वालिटी स्टॉक्स, और इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस व्हाट इज द पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स that can be taken for the upcoming week. So let's get started. But before that, if you haven't subscribed to my channel, please do so because you won't be missing on the important topics that we are going to discuss. Secondly, what I would like to tell you all is, अगर आप लोग फॉरेक्स मार्केट्स में भी इंटरेस्टेड हैं, then I've given the link of introductory videos and how to trade forex markets, and which is absolutely for free. तो आप you can go through that description and check out the link below. और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, you can definitely feel free to get back to us. Now let's look at what Nifty is doing. So अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, I have gone and selected the daily time frame because daily time frame पे एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलता है कि व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस फॉर द एंड ऑफ द डे. दैट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैव एग्रीड टू कंसिडर दैट टू बी अ फेयर प्राइस. हम लोग आर्ली कैंडल स्टिक्स पे चेक करते हैं 15 मिनट्स पे फॉर ट्रेडिंग वी सी, बट दोज आर नॉट द क्लोजिंग प्राइसेस. व्हाट मैटर्स is where the price is closed at the end of the day. That is why we are focusing on daily charts. तो अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि this particular move that Nifty has given is a strong move and this can be considered to be a bullish move, wherein market यहाँ से higher highs का formation already start किया हुआ है. But if you see the actual trend, I'll just change the color of this so that there is more clarity. If you see, the broader trend is showing something like this. So I'll just change the color and I'll make it into pink and I'll take it out. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, major trend is creating a series of lower highs and lower lows, wherein जो ये जो major trend है, this particular major trend, इसमें ये एक माइनर करेक्शन हो रहा है. सो इन केस इफ दिस मूव्स लाइक दिस एंड ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर लेवल, देन वी कैन कंसिडर दैट देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड. यहाँ पे डिसीजन लेना कि ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड मूविंग ऑन टू टेकिंग अ ट्रेड एंड सेइंग दैट ये अप ट्रेंड है is not the right way to move in the market at the moment. क्योंकि this particular trade, ये जो ट्रेड है, let me use, just give me a second guys, ये जो ट्रेड है, this trade is actually a major trend which can continue. Minor trend will try to move towards the major trend resistance and then may fall back. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं. तो अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 16800 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, देन यू कैन सी अ शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूइंग. और ये जो माइनर करेक्टिव वेव्स जो बोलते हैं और करेक्शन हायर हाइज जो बोलते हैं, that can be exhausted. Or else the second move that can come is there can be a continuation from here towards the upside. ठीक है? So now we have discussed on what Nifty can possibly do, but हम trade कहाँ पर execute करेंगे? That becomes a challenging task. So what we'll do is, at the moment where currently the market is placed, we'll try to take advantage on both the sides. And how are we going to do that? Okay, so first let me just clear the drawings so that we have a better clarity and the analysis goes smooth. Okay, so first, as I said, this is the resistance hurdle that can be faced by the market. Secondly,
let's look at what the trend is doing. If you see, as I said, the major trend is towards the downside. तो जब तक मेजर ट्रेंड का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, वी कैनॉट कंसिडर इट टू बी अ बुलिश ट्रेंड, राइट? बट यहाँ पर एज एन इंट्राडे ट्रेडर और अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडर, वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर मूव जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है एज अ बुलिश मूव, एंड when it comes for correction, we can look at buying for a dip or buying at dips that we call, and look out for a target somewhere in this area, okay? Because this would be a good target area जो आपको risk to reward भी बहुत अच्छा देगा. And on the downside, as you can see, this particular level can act as a support level in a shorter time frame or in a shorter trend, as we can say, or a corrective trend. आप यहाँ पर at this level you can plan to buy with a small stop loss and consider this to be a target. तो यहाँ पर at this level I'll look for buying at dips, but I know at the back of my mind that the major trend or the higher time frame trend is bearish in nature. तो मुझे यहाँ पर the retracement trade that we call can be taken with a small risk and a great reward. And यहाँ से once I execute my exit, I can look for bearish to sideways trades in the market. तो ये हो गई Nifty for the next week. Now let's look at what Bank Nifty can possibly be traded, at what levels we can trade, और कहाँ पर हम लोग better execution points find out कर सकते हैं. So अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में, as you can see, this itself tells you that it is again in downtrend, okay? If you see, there is no correction that has happened in a big way. यहाँ पर आप देखोगे ये again strong resistance level play out कर सकता है, and the minor trend again here is bullish, you see. So यहाँ पर what we can do is we can wait for market to retrace somewhere at this levels and shoot up. तो मेरा buying जो trade होगा that may be in this range of somewhere around 34,000 to 33,500 levels, and my stop loss will be somewhere at this level of 32,800, okay? तो मैं यहाँ पर एक small risk लेके ये target पे exit कर सकता हूँ, considering where my major trend is placed. तो major trend यहाँ से फिर से एक downside move देने के chances बहुत high हैं. Let me change the color again so that we replicate. तो यहाँ से from this point market correct होने के chances बहुत high हैं, and this is a smaller retracement waves, okay? So ये यहाँ पर corrective move जो है वो भी हम लोग capture कर सकते हैं, remembering one thing in our mind that major trend is still on the bearish side. तो जब तक ये level market break करके यहाँ से ऊपर नहीं जाता, something like this, till then I cannot consider to be bullish. The high chances are market में fall down, क्योंकि ये जो corrective move है वो major trend के against है, तो वो break होने के chances on a higher side होंगे. But once this level is broken, the higher time frame people who are looking at a major trend, उनका perception भी change होगा. Then the bullish trend may start to happen again. But till then, try to move with small retracement or buying at dips, but this level should be your stop loss और targets यहाँ पर रखें, okay? यहाँ से market breakout देता है, again you have to change your thought process and go for bullish views. But यहाँ पर अगर आपको resistance दिख रहा है, consider that the trend may continue, okay? So this was it for this particular video on Nifty and Bank Nifty. I hope
this analysis would definitely help you to take the trade in upcoming sessions. In case आपको कुछ doubts है, you can definitely put it into comment sections below. If you are looking out for some videos on any particular topic related to markets, you can definitely comment on the description below, and I'll try to make a video and give you a clarity as soon as possible on the same. So once again, thank you so much for all your support. Keep subscribing and liking the videos and sharing the videos to all your friends, and see you soon in the next video. Thanks for watching.